Students, today I will discuss about the rest and motion, means starting of the kinematics. It is a part of the mechanics, but in the kinematics we will discuss the motion of a body without knowing its cause. तो इस टॉपिक में हम किसी बॉडी के मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके कारण के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे. देन एट फर्स्ट इन दी काइनेमेटिक्स द ऑब्जेक्ट साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज टेकन एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट. यानी जब हम काइनेमेटिक्स डील करते हैं तो बॉडी के साइज को हम नहीं लेंगे, हम उस पूरे साइज को एक पॉइंट मान के चलते हैं. जैसे अगर ट्रेन इज मूविंग तो आई एम सेइंग दिस इज द ट्रेन, दिस पॉइंट इज द ट्रेन, द ट्रेन इज मूविंग, दिस इज द ट्रेन. सो in this branch of the mechanics, ignoring the size only, we take the point like object. Now what is the rest and motion? Actually the rest and motion are the combined property of the object under study and observer. Means कि अगर किसी बॉडी का रेस्ट एंड मोशन जानना चाहते हैं तो हमें उस बॉडी के मोशन को स्टडी करने के लिए हमें ऑब्जर्वर को भी स्टडी करना होगा. फॉर दिस, सपोज we are sitting in a train and which is moving with a velocity, and other passengers are sitting near me, and I am state of rest with that passenger. मैं अगर अपनी किसी रेलगाड़ी में सफ़र कर रहा हूँ और अपने नियर बाई पैसेंजर जो कि मेरे बगल में या कहीं बैठा हुआ है उसके रिस्पेक्ट में मेरा पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है. सो आई एम इन द स्टेट ऑफ रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू दैट पैसेंजर, बट माई पोजीशन इज चेंजिंग विथ टाइम विथ रिस्पेक्ट टू द मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म और द ट्री और द इलेक्ट्रिक पोल आउटसाइड द ट्रेन, because there is a change in position. So I am in a state of motion with respect to that electric pole and that man standing on the road. So thus we can say that this is the combined property of the object under study and observer. तो हम इस दोनों बातों को ध्यान में रखेंगे. And for this, to locate the position of a body, we take a reference, and that reference in general is taken as the coordinate frame, and this is the x-axis and this is the y-axis and this is the z-axis, and means z-axis is in this way, and you have to locate, and suppose the observer is sitting at the origin of this frame, and suppose if there is a position of a object and observer is here, so you have to locate the position of the object with respect to this origin, means this observer. And you know that suppose x1, y1 and z1 are the coordinates of this point, means x1 is the perpendicular distance from the y-axis, y1 is the perpendicular distance from the x-axis, and z1 is the perpendicular distance from the z-axis. So this is the coordinate system, and the line joining and
from origin to this point, position of the object is known as the position vector. So this is the position vector and this is the OA and this is the coordinate. So in the vector form, I discussed already the vector and scalar. So this is the x1i plus y1j plus z1k is the position vector of this body. After an interval of time, it comes at this position. Suppose this position B, and its new coordinates will x2, y2 and z2, since observer is sitting at the origin. And so this is the position vector of this B, OB. This is the R1 suppose, and this is the R2, and this is the OB, and this is the x2i plus y2j plus z2k. So this is the position vector, and this AB is the displacement. So AB is the displacement, and this AB may be written in the vector form. You know that by the triangle rule of vector addition, OAA plus AB is equal to OB, and so AB is your displacement, and so AB is written as OB minus OA, and this is the final position vector and this is the initial position vector. Putting this value, we can get the magnitude and direction of this AB, and this AB is a vector quantity and its direction is from initial to the final position of the body. And if this is delta R, so this is the delta R, and this delta R is the change in position. Now, so to locate a body in a space, you would be required a 3 coordinates x, y, z, and a 4th coordinate to know the motion is the time. And there is a instrument to measure the time is placed at this origin. यहाँ पर एक टाइम मेजर करने की इंस्ट्रूमेंट भी है जो टाइम मेजर करता है. तो सपोज करते हैं कि यहाँ पर जिस समय ए पे था उस समय वो घड़ी टाइम शो किया T1, और जब वो बी पे पहुँचा तो घड़ी टाइम शो किया T2, and so the time interval is T2 minus T1. So this is the time interval and this is the displacement. Now another thing is that suppose the body will move from A to B, and here in this figure you may see that there are so many possibility of the path to for the movement of a body from A to B. Means हम A से B तक ऐसे आ सकते हैं, हम A से B तक ऐसे जा सकते हैं. There are so many possibility of path to reach B from A. So, and this is the length of the path here, and this length of path is not any specific direction, and this length of path is known as distance. क्योंकि इसका कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है इसलिए ये स्केलर है, बट this is the vector. And so the vector can be added, subtracted by the special rule
and that rule may be the triangle rule or the rule of the parallelogram, but since distance is a scalar, so the distances are adding by the simple algebraic rule. So this is the difference between the distance and displacement. Suppose your length of path is this, it may be. So here there is no difference between the distance and displacement. So distance may be equal to displacement and less than displacement. So the relation is the distance may be equal and less than the displacement. Now I am going to discuss the instantaneous rate and the instantaneous rate of change in the displacement or distance. For this, suppose this is the x-axis and this is the y-axis, and here I am going to discuss the nature of the change in position or distance travelled with respect to time taken. So here I will take the distance or displacement because the magnitude of the displacement is distance. So here the time, and here this is the s, and this s is the distance, and a graph is plotted between the distance and time. And suppose this graph is in this form, just like a arc, we can say the origin. At any instant, suppose at this time t, this is the value of s, and after at this point the time is measured t plus delta t, and then the distance travelled is s plus delta s, and this is the delta t because this is the t plus delta t and this is the t. So difference of this is the t plus delta t minus t, it is delta t, and this is the s plus delta x and this is s, so it is delta s, and the average speed is equal to total distance divided by time taken, or you say that total time taken. Now the total distance is the delta s and this is the delta t, and if you are dealing with a graph between the distance and the time, so the speed is measured by this delta s by delta t between the interval of time, and it will give the average speed by this mathematics. Now if I join this line, and suppose this is the AB, and so this is the right angle triangle AB, suppose it is C, so it is a right angle triangle,
and is in right angle triangle, delta s by delta t, this is the perpendicular, this is the base, so it is the tan theta, and this is the theta. In the language of mathematics, it is known as the slope. Tan theta is 0, so slope is 0, and जैसे जैसे इसका स्लोप बढ़ते जाएगा द वैल्यू ऑफ tan theta बढ़ते जाएगा. And this is the slope of AB. ये इस AB का स्लोप. तो हमने देखा कि एवरेज स्पीड हमको निकालने के लिए ऐसा कर सकते हैं इफ यू आर डीलिंग विथ ए ग्राफ. Now the question is that what is the instantaneous speed? Means a speed at a particular instant, and for that means the time interval is negligible, means 0. So time interval is 0. So you know that ds by dt is defined as the limit delta t tends to 0, delta s by delta t, and it is the instantaneous rate of change in distance with respect to time, and so it is the instantaneous speed. And नाउ डेल्टा टी टेंस जो यानी कि ये टाइम छोटा होते जाएगा, तो थोड़ा सा हम अलग दिखाते हैं आपको ऐसे ऐसे करके. अगर ये छोटा होते जाता है टाइम, तो ये लाइन जो कट करेगा इस कर्व को वो छोटा होते जाएगा, और एट लास्ट ये सिंगल पॉइंट पे कट करेगा. यहाँ आप देखिए ये आपकी ये हो जाएगी. सो दिस ए बी becomes a tangent at this point A, and this is the theta 1, so this is the tan theta 1. Thus we can see that if you want to know the instantaneous speed, so at a particular instant, so at that instance you draw a tangent, and the slope of the tangent will represent the instantaneous speed. And for the average velocity, बहुत सिंपल है. आप डिस्टेंस नहीं लेकर के डिस्प्लेसमेंट लेंगे, और यहाँ पर हम लोग यहाँ इंस्टेंटेनियस के केस में कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पर्टिकुलर इंस्टेंट में जो एवरेज इंस्टेंटेनियस से स्पीड होगा वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी होगा. इसलिए होगा क्योंकि आपकी जो सपोज कर लीजिए कि पाथ इज सपोज करते हैं कि ऐसे कोई पाथ है, तो यहाँ पार्टिकल का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये है, यहाँ ये है, यहाँ ये है, तो यहाँ ये है, यहाँ ये है. तो एवरेज वेलोसिटी जो उसकी होगी तो वो तो टोटल डिस्टेंस पर टोटल टाइम है, और डिस्प्लेस और अगर एवरेज वेलोसिटी निकालना होगा तो ये डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करना होगा, और एवरेज स्पीड निकालना हो तो ये डिस्टेंस में जाकर टाइम निकालना होगा. तो इट मे बी डिफरेंट. एंड बट फॉर द इंस्टेंटेनियस दिस इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड, एंड एज वेल एज इट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑल्सो. सो पर्टिकुलर इंस्टेंट में दोनों सेम होता है, इसलिए दोनों को हम ऐसे डील करेंगे. अब एक बात प्रश्न उठता है कि डिफरेंस क्या होगा. तो जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में है वही है, ये स्केलर है, और जब वेलोसिटी की चर्चा करेंगे तो वहाँ लिखेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, तो वो हमारे पास क्या होगा, वेक्टर होगा. जो हमने बताया था कि स्पीड डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस, तो वैसे ही हम कहेंगे कि वेलोसिटी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू स्पीड, तो सेम है. यूनिट की बात आप जानते हैं, मीटर पर सेकेंड ऐसा यूनिट है. डायमेंशनल फार्मूला भी जानते हैं. So these are the concept of the instantaneous and the average. In the next class I will discuss the motion under the acceleration.